So actually, this is something that I'm also curious about, right? So the content data, like a lot of it is educational. So do you put it for free right now? It's all of it, everything is accessible, or is there anything that is something that is directed towards, like a maybe because it takes a lot of effort, right? So do you plan on doing something which is paid maybe, but involves a lot more nuance? So all the content on YouTube is free. Mm-hmm. Earlier, I was very, very paranoid. कि How can I even do this full time? Because free content, there's no money. There's no money. You cannot make anything. But then I took a few boot camps initially after leaving my job, and it was honestly very rewarding. It was 2000 ka boot camp, like over a weekend. But then जो मैंने 3 दिन में पढ़ाया ना, मतलब I myself took months to study that much. जितना कॉम्पैक्ट था, लाइव था, लोग बात कर पा रहे थे. तो आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ पीपल फर्स्टली कैन अफोर्ड इट. Secondly, they don't have the time to upskill itna. So there are a lot of people who are looking for a lot of paid content also. So free content तो हमेशा रहेगा ही. That is something that will never stop. But then I started doing courses where I do more structured things. कि भाई हाउ मैं पूरा एंड टू एंड तैयारी करवाऊंगी, मतलब उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. You don't have to worry about anything else. Just believe in me. जो मैं बोल रही हूँ आप करते जाओ. तो वो पूरा गाइडेंस मिल जाती है, कम्युनिटी रहती है, सब लोग कर रहे रहते हैं, तो कंसिस्टेंसी भी रहती है. अगर आप खुद से पढ़े होते तो यू नीड द मोटिवेशन कि आप रोज जाके वीडियो देखो. उससे से कम्युनिटी में लाइव है तो आपको आना ही है, मतलब आपको आके क्लास अटेंड करनी है. आपने पैसे दिए क्लास के, तो मैं हर क्लास के बाद बोलूंगी कि भाई पैसे दिए, आओ चुपचाप पढ़ाई करो मेरे साथ. तो आएंगे, पढ़ाई करेंगे, 2 घंटा बैठेंगे. तो नाउ आई रियलाइज कि दिस वर्क्स ये आउट फॉर लाइन मैं भी एवरीवन. छापने वाला हूँ. तो मतलब आई फील कि इट हैज वर्कड आउट रियली वेल. इन व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब कोई कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो ना, कोई कितना भी अच्छा एजुकेटर क्यों ना हो, जब आप पेड कोर्सेज स्टार्ट करोगे थोड़ा तो बैकलैश आएगा, नेगेटिविटी आएगी कि देखो पेड कोर्स निकाल दिया. बट आप कुछ भी कह लो, जितने लोगों का फायदा होता है ना, मतलब लोग मेरे को बोलते हैं कि कुछ कंपनीज है जिन जो मैं पढ़ाती हूँ, मतलब से अगर मैं 3-5 हज़ार में पढ़ा रही हूँ, तो वो कंपनीज या कुछ कोर्सेज जो ऑनलाइन है, वो 40,000, 50,000, 2 lakhs में वो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो मैं 3,000-5,000 में पढ़ा रही हूँ. और अगर मैं आपको उस लेवल का एक्सपर्टीज दे रही हूँ, टाइम दे रही हूँ, एफर्ट दे रही हूँ, तो व्हाई शुड आई नॉट बी पेड फॉर इट? मतलब व्हाई शुड आई बी अंडरपेड फॉर एनीथिंग दैट आई एम डूइंग? सो करेक्ट. इट हैज टेकन टाइम टू डेवलप दिस थॉट प्रोसेस. मतलब बहुत टाइम तक आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं, सब कुछ फ्री रहना चाहिए, पर फ्री तो रहेगा ही. मतलब दैट इज नॉट लाइक कि वो चला जाएगा. बट टू टेल कि हाँ ये इंटरव्यू के लिए जरूरी है, ये इंटरव्यू के लिए नहीं जरूरी है, वो गाइडेंस देना, वो मेंटरशिप देना कि अगर आपका इंटरव्यू अभी आ रहा है तो आप क्या पढ़ो, मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, वो थॉट प्रोसेस कैसे बनाओ, सब कुछ आप यूट्यूब वीडियो में, मतलब आप देख के नहीं कर सकते. Right. Yeah. Very true. And आपके time का भी there should be some value, right? Yes. Which often doesn't happen on YouTube. Yep. Yeah. So doesn't like YouTube monetization does that not suffice, or is it very meager? Can't even take care of half of my rent. I see. So that is why I mean I live that's in also Bangalore. बहुत ज़्यादा यहाँ का रेंट है. आधा रेंट भी नहीं निकलता उससे. Yeah. No, because that is also one of the reasons, right? Why people like, I mean, that is why that business model makes sense, that you need to have a paid, some component of your content has to be behind a paywall because Otherwise of this. I can't do it. Yeah. Correct. You can't do it. Yeah. Correct. Which kind of extends. It is sort of wrong कि कुछ लोग expect करते हैं कि teachers should always do something for free. अगर आप college teachers को देखो, most of them are so frustrated and they are not good teachers because they are not being paid well. Like how do you expect teachers to give their best and then कि मतलब आप देख लो यार, एक NIT IIT के आप टीचर की सैलरी देख लो, एंड फिर आप देखो कि वही बच्चे जिनको वो पढ़ा रहे हैं 2 months down the line they will have a salary of कितना लाख का पैकेज, 20-25 लाख का पैकेज, एंड द टीचर्स आर बीइंग सो अंडरवैल्यूड. मतलब तो हाउ, मतलब उनको मानी कैसे करता होगा यार कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगी और 2 महीने बाद ये गोइंग टू अर्न मच मोर देन मी. Correct. तो आप उस हिसाब से सोचो तो I feel good educators deserve to be paid. And not just that, I mean, at some point, not just educator, right? बाकियों का देख लो, like
you're putting in time into it, effort कर रहे हो. Would you be okay with it if you like put in time at your job and then you're told no, I can't pay you? Yeah, exactly. Go right. That's the thing. And as long as it's quality content, I think not just in terms of education, in general, anything, if you're using it, if you find it useful and it's helping you, then maybe you should consider supporting the people through those I think, initiatives, see, right? fundamentally there's this switch, right? Ki from consumption in, I think it all boils down to that. Eventually, early on there was consumption in piracy. Tremendous amount of consumption in piracy. But as you actually mature or perhaps try to create something of that scale of your own, फिर you realize that इसमें इतना effort लगता है तो आगे से नहीं करेंगे. I think फटका पड़ता है ना, बड़े हो जाते हो तो काम करना पड़ता है जाके, तब पता चलता है कि exactly खुद एफर्ट मारा है. then you realize कि चलो, I mean it's not all, I mean I would say 10 years back everything was torrent. हमारे कॉलेज में तो internal networks, internet, सब कुछ, nobody used to pay for anything. So firstly, मतलब we are not forcing anyone to take the courses. And secondly, जितने का आप कोर्स बिकता है, मतलब उतने के तो आप पार्टी कर लेते हो एक वीकेंड पे. तो आप उतने के पार्टी करने के लिए रेडी हो, बट आप अपने मतलब स्किल पे नहीं काम करोगे जिससे आपकी जॉब मिल सकती है, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगी, आप पूरा लाइफ टाइम याद रखोगे कि ऐसे सीखा था, ऐसे पढ़ने मिला था. आप उतना उसमें नहीं स्पेंड करोगे, उसमें हेट्रेड पास करोगे, पर उतना आप मतलब एक रोड ट्रिप पे आप उतना खर्चा कर दो. तो you sometimes have to, I think, think about these. This also brings in the right crowd, right? And then you get the right crowd who are actually motivated. So if you engage with them, they will also end up engaging back with you, and वो होता है motivation, and nobody is there just for like trolling and things like that. Exactly. YouTube पे कुछ लोग तो आएंगे, मतलब I have had people, जब वो पहले दिखते थे ना likes और dislikes का number, तो I used to have people who have subscribed, क्योंकि जैसे ही notification आएगा I used to get dislikes. Just imagine someone has subscribed to you just so that as soon as you post the video they can go and dislike it. तो मतलब मुझे तो mentality समझ नहीं आती है बहुत. हाँ मतलब तो versus यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब they know my content, they know me, they trust me, इसलिए वो लोग आए हैं.